Physics का sir. How was it? No sir, it went good sir. Good. केमिस्ट्री आपका हो गया ना? Yes sir. You have not sent me the paper by the way. Chemistry. Oh sir, I should. क्या कहते हैं वो उन्होंने क्या कहते जी। हैं वो पे आंसर शीट के साथ अटैच करके देना पड़ा था उनको। अच्छा, क्वेश्चन पेपर नहीं देते हैं आपको? नहीं पता नहीं, वो सिर्फ है ना फिजिक्स का लेने दिए थे, वो केमिस्ट्री का बोले अटैच करके दे दो। अच्छा। फिर Safi have sent me. Yours and Iram's would be same, right, Safia? सर। Your paper and Iram's paper must be same, है ना? और नहीं, सेट वगैरह है, सेट ए सेट बी हो सकता है। हाँ यस सर। Okay. So what I can see is typical questions, right, Safia? Mostly, यस सर। है ना? Questions that you are already expecting. यस सर। Nothing special. Yeah. So today we are going to discuss the topic that is under mechanism of reaction. So in mechanism of reaction, we are going to talk about the different types of reactions on the basis of number of steps it takes for a reaction to occur. So if a reaction is happening in one step, single step, then we say that it is an elementary reaction. It is happening in a single step, like one step the reaction is over. But when we have a complex reaction, complex reactions, they occur in multiple steps. Acha. Just by the way, all of you have this PDF, right? Yes or no? Arslan, Safia, Krishna Priya has it, I know that. Arslan, you have this PDF? I have sent it now last week. Sir, did you send it in the group? No, no, no. To you personally. Yes, I think so. I have. Let me check. And what about you, Safia? हाँ यस सर। आपके Yes पास भी sir है है। ना? ठीक है। आप लोग देखिए, I will again suggest that you guys please print this out and during the class आप इसी sheet को लेकर रखिए. You can note some things down while I am explaining it. ठीक है? And once the class is over, and usually all of these classes will be 15 minutes, 20 minutes, like it will be over before 15-20 minutes, है ना? Like आपका जो 1.5 घंटे का time है ना, 1.5 hours. I will end this classes on like 1 hour, 10 minutes, 20 minutes, so that you can revise those. In those 20 minutes you can revise whatever we have learned, because we will be doing in double speed, right? Because in a single day we will be covering the topics that is generally covered in 2 days, because the notes are already there. ठीक है, लेकिन this is not very efficient if you don't revise it at the same day. ठीक है? So it is my like, if you are not going to revise it on the same day, ये बहुत जल्दी आपके दिमाग से निकल जाएगा, because you are not writing anything, है ना? तो I will leave you guys 20 minutes earlier, 15 minutes earlier. Please sit down at the seat. Don't get up. आपका जो 1.5 घंटे का टाइम उतना ही टाइम लगेगा, बट यू नीड टू रिवाइज इट. मेक सेंस? अरसलान, कृष्णा प्रिया, सफिया. Yes. भले यस ही सर। कल एग्जाम हो आपका प्री बोर्ड कोई साहब, ठीक है ना? भले ही हो नहीं हो हमको नहीं पता, भले ही, लेकिन 15 मिनट आप एक्स्ट्रा तो किसी चीज को दे सकते हैं ताकि ये चीज आपके साथ थोड़ा दिमाग में स्टे रहे. ठीक है? चलिए, मूविंग ऑन.
So elementary reaction, it occurs in single step. Complex reactions, it occurs in multiple step. Now the order of the elementary reaction can be determined by the balanced chemical equation itself. For example, if I have a reaction and the equation of the reaction is A is the reactant and it is giving me product B. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, rate will be equal to K into the concentration of A to the power 1, because the rate of reaction will be only dependent on this particular reactant, and because it is happening in single step. Single step में अगर हो रहा है and we are having 2A and it is giving me product, then the molecular, जो one thing यहाँ पे एक चीज जो आप लोग यहाँ पे समझिएगा, that is molecularity. Molecularity just means the number of molecules acting as reactant. यहाँ पे molecularity भी 1 है, order भी 1 है. When 2A is giving product, then the molecularity is 2 and the order is also 2. When A plus B is giving me product, then in that case molecularity is 2 and order is also 2. With respect to A, the order B also, the order is 1. So for elementary reactions, please ध्यान से समझिएगा इस बात को. For elementary reactions, the molecularity of a reaction is its order. जो भी molecularity होती है वही उसकी order होती है. But in complex reaction, what happens? Here we have written the definition that the number of reactant molecules which must collide for the reaction to occur is called the molecularity of reaction. Molecularity and order of an elementary reaction is always same. Now, what happens in complex reaction? In complex reaction, each step is elementary. है ना, क्योंकि अलग अलग स्टेप में हो रहा है. सो ऑल ऑफ दोज स्टेप्स एटलीस्ट विल बी एलिमेंटरी ना. ऐसा तो नहीं कि स्टेप ही कॉम्प्लेक्स हो जाए. तो जो भी स्टेप, अगर स्टेप भी मान लीजिए आप कॉम्प्लेक्स मान के चल रहे हैं, देन at the end, if we go into the most detailed part, so you will get, okay, fine, first this happens, then this happens, this happens. Those steps will be what? Elementary. That means those steps will be happening in single steps already, obviously, क्योंकि नाम ही उसका क्या है, step. So for example, here we have NO2 plus CO gives NO plus CO2. This is happening in 2 steps, and the step 1 is a slower step and the step 2 is the fast step, relatively speaking. So यहाँ पे in a complex reaction, the slowest step determines the rate of reaction. ठीक है. अब अगर किसी के मन में ना ये सवाल हो, ठीक है, why slowest step is determining, उसके लिए हम आपके पास एक एग्जांपल रखते हैं. Let us suppose we have a t-shirt. हम लोगों ने, we have washed a t-shirt, we have washed a shirt, and we have washed a jeans. है ना. T-shirt takes 5 minutes to dry, shirt takes 10 minutes to dry, and jeans takes 15 minutes to dry. ठीक है. So overall, if I want to dry all of these 3 things, how much time it would take? How much time it would take? Can you please tell me in the chat, in the Zoom chat? How much time it should take to dry these 3 things: t-shirt, shirt, and jeans? Okay, waiting for Arslan and Krishna Priya. ठीक. देखिए, not 30 minutes. ठीक है, ये while you are, हाँ करेक्ट, 15 minutes only ना, बिकॉज जितने देर में ये जीन्स सूखेगा उतने देर में शर्ट और टी शर्ट सूख चुका होगा. मेक सेंस सफिया? Yes, sir. ठीक है, तो ध्यान दी, दैट मीन्स द स्पीड एट विच, है ना, अगर आपको पता करना है कि कितना टोटल टाइम लगने वाला है, तो जो टाइम लग रहा है ना किसी भी प्रोसेस में, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट द स्लोवेस्ट स्टेप. ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द स्लोवेस्ट स्टेप, ये ध्यान रखिएगा आप. ठीक है. नाउ इन दिस केस स्टेप 1 एंड स्टेप 2, तो जनरली लगता है लोगों को कि आखिरी स्टेप पर डिपेंड करेगा. बट लेट अस सपोज जब तक स्टेप 1 हुआ ही नहीं है तब स्टेप 2 कैसे हो सकता है? जनरली लोगों को लगता है कि हाउ द रेट इज गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन स्टेप 1, जबकि स्टेप 2 होना बाकी है. बट प्लीज अंडरस्टैंड, जब व्हेन वी टॉक अबाउट स्लो एंड फास्ट, तो जो फास्ट रिएक्शंस होती हैं, दे हैपन लाइक even before you can like shut your eyes, है ना, एक बार पलक झपकने से भी ज्यादा तेज हो जाती है रिएक्शंस. So they are like in attoseconds, nanoseconds time. So the step 2 is just waiting for step 1 to get over with, and as soon as step 1 is over, step 2 occurs. So time that is taken by step 1, that is the crucial time which is going to be a barrier in the speed of reaction. ठीक है. So slowest step is what? It is the rate determining step. Does this make sense now? Yes or no? Please tell me. Slowest step क्यों होता है? Yes, sir. Yes.
नो, मूविंग ऑन। तो अच्छा, ऐसे आपके पास कोई अगर सवाल आ जाए, यहाँ have been given a reaction, उसमें लिखा रहेगा slow step, then you will see what are the reactants, है ना? And rate of reaction will be the rate constant into NO2 का square, because NO2 are what? These are the reacting species. And because step 1 is what? It is elementary. This whole reaction is complex, but ये single step क्या elementary है, and this is the rate determining step. तो इस step को जो determine कर रहा है, that will be the rate of reaction itself. So we can write R is equal to K into NO2 का square. Make sense everyone? इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए, because we are going to do a question after this. Make sense? इसको please tell me. देख के एक बार अच्छे से देख लीजिए। आंसर कैसे करेंगे? आपको ये आंसर करना पड़ेगा ना, आपको ये इन्फॉर्मेशन दी हुई रहेगी और आपको आंसर ये करना पड़ेगा। ठीक है? I hope there is a question. The molecularity of slowest step is the, चलिए, प्लीज once you're done you will send the answers on my WhatsApp. अब बिल्कुल वही चीज दी हुई है ना, हमने क्या कहा, आपको क्या लिखना पड़ेगा, R इज इक्वल टू, है ना? तो आपके पास रिएक्शन दिया हुआ है, प्रपोज मैकेनिज्म दिया हुआ है, स्लो फास्ट दिया हुआ है, यू हैव टू राइट द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन। रेट लॉ लिखना है, उसके बाद आपको टेल, यू हैव टू टेल व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर आउट ऑफ स्टेप 1 एंड स्टेप 2, व्हिच वन इज रेट डिटरमाइनिंग। ये तीनों चीज आप आंसर करेंगे। यू कैन आंसर इट इन द जूम चैट और ऑन माय व्हाट्सएप, व्हाटएवर यू लाइक। What happened, guys? Don't know? Yes, sir, I'm Yes, sir. sending. Jason, okay.
Very good. Safia and Krishna Priya waiting for you guys. Yes, very good. Krishna Priya, are you sending the answer? Yes, sir. Hold on. So you have sent it on the Zoom chat. No, the third question, Krishna Priya. Rate will be equal to slow step, na? Yeah, the first one. Huh? Krishna Priya. The first one. Yeah, sorry, my bad. Yeah. Moving on. So here we have molecularity of reaction and also molecularity of reaction. It is defined as the number of molecule which must collide, and we have already seen. Now, molecularity of reaction, this is a very important point. Molecularity of a reaction is only applicable for elementary reaction and it has no significance for complex reaction. ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग. This may be asked like for molecularity and order में difference जब बताने की बात आएगी, you can write this point also. और molecularity order of reaction is applicable for each and everything, सारे reaction के लिए, but molecularity is only applicable for elementary and it has no significance for the complex reaction. ठीक है, so complex reaction में molecularity का कोई significance नहीं होता है. Now there are a few things. If the molecularity of reaction is 1, then it is called unimolecular, bimolecular, termolecular. These words you should be knowing because these words can be placed in the MCQs. This reaction, they will give is an elementary reaction, है ना? And so what will be the molecularity? So they can ask it is unimolecular reaction, bimolecular, termolecular. इस तरह के words को दे सकते हैं. Should also know what is unimolecular, bimolecular, and termolecular. Now, the next thing is molecularity greater than 3 is rarely observed because it is very difficult to like all of these four balls are still not in contact with each other, right? So molecularity will be 4 only. 3 तक तो बहुत आसान है, 3 balls को, यानी कि most atoms or the molecules they are spherical, आप उसका assume कर सकते हैं. So 3 can like collide with each other simultaneously, but 4 molecules cannot collide with each other simultaneously, and it is very rare. मतलब एक केस ऐसा हो सकता है that three molecules are colliding in one plane और एक ऊपर या नीचे से आ जाए, ठीक है, तब collision हो सकता है, otherwise it is not possible. That is why इस point को भी याद रखिएगा. This point is there in the NCERT, इस वजह से इसको पूछा जा सकता है in MCQs also, है ना, कि molecularity greater than dash is rarely observed, तो greater than 3 is rarely observed. Now these are the remarks in comparison to the order of reaction. जैसे order of reaction was an experimental concept, molecularity is a theoretical concept. Order of reaction can be positive, negative, zero, fraction, है ना, but molecularity can only be whole number, वो zero भी नहीं हो सकता. It can never be whole number. Whole number सही नहीं है, I think natural number लिखना चाहिए था हमें. It can never be negative, zero or fraction. It has no significance on the rate of reaction. It does not change with temperature and pressure, है ना, because it is वो temperature और pressure पे कैसे change करेगा, because it is written, theoretical है ना, तो किसी भी experimental चीज पे वो change नहीं कर सकता, ठीक है. Now ये right differences between order of reaction and molecularity.
You will compare the remarks of molecularity and the remarks of order of reaction from the previous class. वहां से आप लोग इसको लिख सकते हैं. Now this is ये एक अच्छा सवाल है ना, जिसका आंसर हम लोगों ने भी लिखा है, हाउ ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी आर डिफरेंट फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. तो इसका आंसर ये, molecularity of a reaction is only applicable for elementary reaction. It has no significance for complex reaction. This was the answer that was there in the CBSE marking scheme, है ना. तो वहीं से हमने बस इसको लिखा है, बस ये लिखना है आपको, the order is determined. ठीक है. चलिए अब नेक्स्ट आपके पास एक assertion reason वाले सवाल है. सो चलिए try this one. Yes, assertion reason में देखिए आप लोग कम से कम ये तो बता दें, is assertion true? True or false? Tell me. अच्छा ठीक है. So assertion is true, है ना, because what they are saying, the molecularity of reaction H2 plus Br2 gives 2 HBr appears to be 2. सही बात है, molecularity 1 and 1 है, तो molecularity it appears to be 2. Fine. Two molecules of the reactant are involved in the given elementary reaction. So that is also true. Then we will write, we will form a statement, assertion because reason. The molecularity of reaction H2 plus Br2 gives 2 HBr appears to be 2 because two molecules of the reactants are involved in the given elementary reactions. So assertion because reason statement also makes sense, and that is why this is also true. And hence we can write assertion and reason both are correct, and reason is correct explanation of assertion. ठीक है. So this is a question that is, if the first order reaction involves gaseous reactants and the gaseous products, the unit of its rate is going to be ATM second inverse. है ना. First order में देखिए, for first order reaction, so rate is equal to K into, you will be writing the not the concentration but rather the ये pressure. ठीक है, pressure of A to the power 1. So the first one involves gaseous reactants and gaseous product. The unit of rate of the unit of its rate is going to be, and that is why rate constant K will be equal to rate divided by
ये सेकेंड इनवर्स होगा क्या? एक सेकेंड, जस्ट गिव मी सेकेंड. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रेशर एटीएम पर सेकेंड. रेट अपॉन प्रेशर ऑफ ए. ठीक है, तो रेट का यहाँ पे कंसर्न, रेट का यूनिट्स क्या लिखेंगे हम लोग? रेट वी विल बी राइटिंग एज चेंज इन द प्रेशर ऑफ ए डिवाइड बाई टाइम rather than concentration. तो सेकेंड इनवर्स होना चाहिए ना, with the first and gases to the unit of its rate. अच्छा, units of its rate, my bad guys. rate constant नहीं है, rate है. ठीक है, so if rate is there, then rate का जो in general unit होता है, that is moles per liter per second. Instead of moles per liter, we use ATM when everything is in gas, so it will be ATM per second. ठीक है, so it is the third one. हम rate constant सोच रहे हैं बार बार. ठीक है, so order of reaction, then the unit of its rate is. Okay, so this is, and चलिए ठीक है, कुछ यहाँ पे सवाल है. This is related to the last class. Try this सर, one. जी जी बताएं. मोल पर लीटर पर सेकेंड वो तो जीरो ऑर्डर का यूनिट है नहीं? नहीं नहीं, असल में दे आर आस्किंग फॉर नॉट फॉर रेट कांस्टेंट, रेट की यूनिट पूछ रहे हैं वो, रेट की, रेट ऑफ रिएक्शन की. ओके. मेक सेंस? यस सर. वो मेरे दिमाग में भी वही रेट कांस्टेंट ही आ रहा था, इस वजह से आई वाज कंफ्यूज कि सेकंड इनवर्स होना चाहिए, बट सेकंड इनवर्स कहीं दिया हुआ नहीं है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, बट दे वर आस्किंग फॉर रेट. ओके, सोफिया हैज आंसर्ड, वेटिंग फॉर अदर्स. इस तरह के सवाल वैसे बोर्ड्स में मतलब आने के चांसेस थोड़ा कम है, बिकॉज दे हैव हियर 3/2 एंड एवरीथिंग. तो थोड़ा सा यहाँ पे ना स्मार्ट आप लोग ये कीजिएगा कि अप्रोच आपका ये रहना चाहिए. ए का आपने देख लिया, लाइक यू सी हियर, इफ आई गेट द ऑप्शन ए राइट, देन मतलब हमारे पास सीधा आंसर आ सकता है ना? किसी भी ऑप्शन में आप देख सकते हैं. सो 3 3 है यहाँ पे कॉमन, हियर वी हैव 4 4 कॉमन, हियर वी हैव 2 2 कॉमन. सो जिसका भी आपको पता है, वी नो दैट फॉर जीरो ऑर्डर इट इज व्हाट, इट इज सेम एज द रेट ऑफ रिएक्शन, इट विल बी मोल्स पर लीटर पर सेकंड. सो ये तो सही है आपका, दिस इज फाइन. सो ए का 1 होगा, इतना हम लोग को पता है. ठीक है, और दूसरा आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, बिकॉज सी में वी हैव फ्रैक्शंस हियर, तो यहाँ पे ये फ्रैक्शंस, दीज फ्रैक्शंस दे डू मेक सेंस हियर, है ना? तो सी का क्या होगा? सी का होगा 4. ठीक है, सी का क्या होगा? 4 होगा. सो यू कैन सी दैट डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे. उसके बाद आप लोग कंपेयर कर लीजिए, सो इट विल बी फाइन मोस्टली.
ठीक है, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्लास. Now we have important section, that is the types of order of reaction, and this topic is also under integrated rate equation. We have to study two orders, zero order and the first order. So zero order reaction में क्या होता है? We have A giving us product. Now rate आप ना दो तरीके से find कर सकते हैं. Either you go to the lab and you calculate and everything. That is, rate is equal to, you will see the concentration or how the concentration of A is changing per unit time. Then you will divide both of those things and you will get the rate. Or what you can do, if you know the rate constant, ध्यान से सुनिएगा, if you know the rate constant, then you don't have to go to the laboratory. What you can do, rate constant आपको पता है और उस reaction का order पता है आपको, that it is a zero order reaction, then you can calculate rate sitting on your desk itself, है ना. अब ये है आपके पास, इसको हम लोग बोलते हैं this is experimental rate. इसके लिए आपको lab जाना पड़ेगा. And this is known as theoretical rate. This is known as theoretical rate. Why? It is not because it has been we have got this as theoretical, we have got this by theory, but इसको practical करने के बाद ही मिलता है. But लेकिन अब application इसका ये है that you don't need to go to laboratory in order to perform any, you don't need to perform any experiment in order to get the rate once you have the K and the order. ठीक है. So now you are going to equate both of these things. Minus dA upon dt is equal to K concentration of A to the power 0. Concentration of A to the power 0 will be equal to 1, so we can ignore that part. I will take the negative sign and the dt that sign, variable separation. dA is equal to minus k dt. Now once I integrate both sides with limit, the limit of A will be initial concentration of A to whatever concentration of A is after time t. ठीक है, तो A के लिए लिमिट्स होंगे A0 to A, and the limit for t will be 0 to t. 0 to t. 0 is when we are having initial concentration of A, and the integration of dA will be equal to just A, integration of dt will be equal to t. We have the limits. We will first of all put the upper limit, then the lower limit, upper limit, then the lower limit. We have got A minus A0 is equal to minus KT. Now we will just do some rearrangements and we will get A is equal to A0 minus KT. अब ध्यान से तुम सुनिएगा जरा, इसका मतलब what is the use of this type of formula. तो जब भी आपके पास कोई फॉर्मूला आता है ना, तो ये समझ लीजिए there are two things. You can either use a device to measure something, or you can use a formula to calculate something. If we are devising a particular formula, तो वो हम device बचाने से बच रहे हैं, है ना. We don't want to make that device. We have to save money. यहाँ पे आपके पास कैसे काम आने वाला ये particular formula. आपने initial concentration ले लिया, आपको rate constant अगर पता है, then you can very much control how much reaction can take place. आप क्या कीजिए, ये देखिए कि आपने कितना लिया 100, और उसके बाद आप सेट कर दीजिए टाइम. अगर 5 सेकंड करेंगे तो कितना रिएक्शन होगा, 6 सेकंड में कितना रिएक्शन होगा, 7 सेकंड में कितना रिएक्शन होगा. यू कैन डिटरमाइन ईच ऑफ दीज थिंग्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला. यू डोंट नीड टू टेक एनी, आपको लैब नहीं जाना पड़ेगा. मेन चीज यही है. ये जो हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला, इसका फायदा क्या हो रहा है? फायदा ये हो रहा है दैट आई कैन कंट्रोल द होल रिएक्शन. द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ ए जो हम ले रहे हैं, और उसके बाद कितने टाइम तक हमको रिएक्शन चलाना है टू गेट अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट. So this is the use of this type of integrated rate like expression. अब यहाँ पे क्या है, this A, it is the remaining concentration of the reactant. A naught is the initial concentration of reactant. K is the rate constant and T is the time. I would like you guys to please write this. Maybe आप लोग को याद हो, लेकिन please जो भी कॉपी में आप लिख रहे हैं कुछ भी, अभी इसको please लिख दीजिए जरा. Done writing this? I hope you are done writing this. अब बहुत ही आसान सा सवाल है, ठीक है. Please write this question for a reaction A to B, which इतना calculate the amount of reactant the phase reacted in 10 seconds. ठीक है, solve this.
Send your answers once you're done. इसमें आपको ना ऑप्शन दे देते हैं इसमें थोड़ा सा। अच्छा बताइए, आंसर आ रहा है? आंसर नहीं आ रहा होगा इसका, सॉरी। अच्छा ठीक है, इस सवाल का आप लोग का आंसर नहीं आ रहा होगा। इज समथिंग मिसिंग? यस सर। व्हाट इज मिसिंग? सर ए नॉट। ए नॉट इज मिसिंग। यस कृष्णा प्रिया सफिया, ए नॉट इज मिसिंग? यस सर। पक्का? यस। ए नॉट इज मिसिंग। चलिए सवाल को देखते हैं। सी गाइस, आपसे पूछा, आपको क्या दिया हुआ है? रेट कांस्टेंट दी हुई है ना? देयर आस्किंग कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ए रिएक्टेड इन 10 सेकंड्स। तो ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कि ये जो है क्या बता रहा है आपको। 2 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। रेट कांस्टेंट क्या बताता है? रेट कांस्टेंट आपको बताता है द रेट ऑफ रिएक्शन, जब आपने मतलब यू हैव टेकन सर्टेन अमाउंट। तो ये बहुत अच्छे तरीके से बता रहा है दैट 2 मोल्स पर लीटर ऑफ ए इज रिएक्टिंग इन ईच सेकेंड्स। मेक सेंस? ये सुनो, 2 मोल पर लीटर इज रिएक्टिंग इन 1 सेकेंड। क्या ख्याल है? बात समझ में आ रही है? ये सुनो, रेट कांस्टेंट यस सर। यस। है ना। अब बताइए, जब 2 मोल्स पर लीटर इज रिएक्टिंग इन 1 सेकेंड, देन 10 सेकेंड में कितना रिएक्ट करेगा? 20 मोल्स पर लीटर। आंसर आ गया। ठीक है। ऑल्सो अब देखिए, फॉर्मूले के हिसाब से भी हम आपको बता देते हैं, ठीक है। फॉर्मूले के हिसाब से भी बता देते हैं। आपको लग रहा होगा ये तो सर खेला हो गया है यहाँ पे, है ना। ठीक है, ये फॉर्मूला है जिसमें आप लोगों को ऐसा बिल्कुल ऐसा महसूस हो, ओह अच्छा ठीक है फाइन। ये तो आपको लग रहा होगा कि ये तो सीखा ही नहीं हमने, ये क्या हो गया। अब देखिए जरा, दे आर आस्किंग द अमाउंट ऑफ ए विच इज रिएक्टेड, रिएक्टेड नॉट रिमेनिंग। आप ए निकाल रहे थे, तभी आपको ए नॉट चाहिए था। आपको अगर हम इनिशियल अमाउंट दे भी देते ना, तब भी आपका आंसर गलत आता, बिकॉज आप क्या निकालते? कंसंट्रेशन ऑफ ए, एंड दिस इज व्हाट रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो कि हमने लिखा हुआ है। फिर भी आप यही आंसर निकालते ना, द रिमेनिंग कंसंट्रेशन। बट व्हाट इज द क्वेश्चन आर आस्किंग? द अमाउंट ऑफ ए रिएक्टेड। मेक सेंस? यस और नो प्लीज टेल मी। असलाम कृष्णा प्रिया सफिया, यस सर। ठीक है। तो आपको क्या निकालना था? आपको निकालना था यहाँ पे इनिशियल होगा आपके पास ए नॉट, उसमें से ए बचा हुआ होगा इनिशियल, दिस इज रिमेनिंग। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वही क्या हो जाएगा? अमाउंट रिएक्टेड। मेक सेंस? यस नो प्लीज टेल मी। बोलो भाई, यस। है ना। तो ए नॉट माइनस ए में क्या करना पड़ेगा आपको? दिस ए हैव टू गो दिस साइड, माइनस के टू हैज टू गो दैट साइड, एंड दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच? इट विल बी इक्वल टू के टी। तो दिस अमाउंट रिएक्टेड इज इक्वल टू के, दैट इज 2 जो भी यूनिट्स है, इनटू टाइम, दैट इज 10 सेकेंड। सो दिस विल बी इक्वल टू 2 मोल्स पर लीटर। एंड आई होप यू कैन सी दैट यहाँ पे जो रेट कांस्टेंट का पर सेकंड है और जो टाइम का सेकंड है, वो दोनों कैंसिल हो जाएगा और आपके पास यूनिट क्या बचेगा? 2 मोल्स पर लीटर। मेक सेंस? यस और नो प्लीज टेल मी, बताएं। बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, प्लीज कॉपी दिस डाउन। ऐसे सवाल दिक्कत है, सीबीएसई पूछता नहीं है ऐसे सवाल, है ना। नहीं तो है, कितना खूबसूरत सवाल है कि नहीं बताइए, है ना। यस सर सर। 20 जी। कृष्ण प्रिया, एनी क्वेश्चंस गाइस? shouldn't it be 20 euro 2 moles per liter? तो एक सेकंड, 20 20। हाँ जी जी जी। आप बताइए क्या करें, ये 20 होगा, वो मेरा टाइपो हो गया था, समझ लीजिए। यू आर सेइंग अबाउट दिस थिंग? यस कृष्ण प्रिया, Sorry sir. यू यू आर सेइंग अबाउट दिस 20? Yes sir. हाँ हाँ जी जी सही है। सॉरी, वो मेरी मिस्टेक थी, आई डिड नॉट पुट द जीरो देयर।
Done, everyone? Just let me know once you're done. Asman, just waiting for you. ठीक है. I think ये question जब हमने दिया था, in this question I initially gave like A naught is 50, then I removed that question. मतलब वहां से फिर से हमने 50 हटा दिया था, दोनों तरीके से सॉल्व करके दिखाया था. ठीक है. This is same thing. Amount reacted in 1 second is 2 mole है ना. I hope you can understand this when you have the notes. So here you can note that for zero order reaction, the amount reacted is equal to Kt, and amount reacted is independent of initial concentration, है ना. Make sense? तो ये जीरो ऑर्डर के लिए एक सवाल आपका बन सकता है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, दैट व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट. तो द अमाउंट रिएक्टेड है ना, it is what is it is independent of initial concentration. It only dependent on the rate constant and the time. Next we have the concept of half life. All of these things are there है ना, तो बस आपको प्रिंट आउट निकाल के उसको अच्छे से नोट डाउन करके रखना है. What is half life? Time taken for the 50% completion of the reaction. ठीक है. 50% completion का मतलब क्या है, that the amount of reactant is reduced to its half concentration. आपने 100 से स्टार्ट किया तो 50 हो जाए, है ना. आपने अगर 200 से स्टार्ट किया तो 100 हो जाए. So at T half, the concentration of A will be equal to A naught by 2. The reacted amount is equal to A naught by 2 because बात समझ में आ रही है ना. T half में क्या होगा, remaining concentration A naught by 2, तो reacted concentration भी क्या हो जाएगी, A naught by 2. Half of the reactant is remaining and half of it has been reacted. Make sense? Yes or no? Please tell me. बात समझ में आ रही है? Yes, sir. So we can Yes, sir. directly write, हमने क्या लिखा है, reacted amount is equal to A naught by 2. reacted amount का फॉर्मूला क्या था, KT, जहां पे T क्या है, T half. बस आ गया फॉर्मूला. A naught by 2 is equal to KT half, so we can write T half is equal to A naught by 2K. This is the formula for what? This is the formula for the T half of the zero order reaction. अब इसके बाद एक डेरिवेशन आप इसको समझ लीजिए. दूसरी डेरिवेशन जो कि जनरली लोग करते हैं, that this is the formula A is equal to A naught minus KT when T is equal to T half, A is equal to A naught by 2. So the remaining concentrations के लेके हम कर रहे हैं यहाँ पे. So ये आपका क्या था, this is the amount which is reacted from, if you are going to take that as a basis, then you can have this particular way, and this is the reactant amount which is remaining. So A naught by 2 is equal to A naught minus K T half, and when we can shift this T half that side, A naught by 2 that side, and you will get K T half is equal to A naught minus A naught by 2. A naught minus A naught by 2 will be equal to A naught by 2 itself, because 1 minus 1 by 2 is equal to 1 by 2. Similarly, A naught minus A naught by 2 will be equal to A naught by 2. Fine. So this is the same formula, but there are two different approaches in which you can derive this particular thing. Derivations generally नहीं आते, अब और नहीं आएगा आप लोग का, because applications based और मतलब memory, remembrance और understanding से ज्यादा सवाल नहीं, analytical सवाल ज्यादा आ रहे हैं, creativity वाले सवाल ज्यादा आ रहे हैं. ठीक है. So these are the derivations. Next is the time taken for the completion of reaction, कि पूरा का पूरा reaction कब होगा complete. So फिर से यहाँ पे हमारे पास we can have two approaches. I will take only the amount reacted approach because वहाँ पे फॉर्मूला छोटा हो जाता है. At T 100%, amount reacted will be A naught. यानी कि इनिशियल अमाउंट जो आपने लिया था 100 लिया था, कितना रिएक्ट हो गया, 100 ही रिएक्ट हो गया. एवरीथिंग हैज रिएक्टेड, दैट इज व्हाट वी कॉल ना कंप्लीशन. तो T 100% मतलब 100% of A naught has reacted. So I can say A naught will be equal to K T 100% and T 100% will be equal to A naught upon सिर्फ K. So T 100% को आप क्या लिख सकते हैं, 2 इन, अब देखिए 2 ऊपर मल्टीप्लाई किया, 2 नीचे मल्टीप्लाई किया. So I can write this as 2 into A naught by 2K, and A naught by 2K we know that it is equal to T 50%. So this relationship can also be asked.
What is the relationship between T 100% and T 50% for a zero order reaction? So this is the relationship. T 100% is twice that of T 50%. ठीक है. Next is the graphs for zero order reactions. So each and every graph will be drawn from a particular equation. Equation है, साथ साथ उसके क्या है, graphs है. So we have R is equal to K into concentration of A to the power 0, and you know that A to the power 0 will be equal to 1. That means the rate of reaction, it is not dependent on A naught. तो A naught चाहे बढ़े चाहे घटे, A naught is more or less, it doesn't matter, the rate of reaction will be a constant. Moving on, we have the another equation, that is the integrated rate law expression, which is A is equal to A naught minus KT. Here A, that is the concentration of A, that is the y-axis. A naught, it is constant because initial concentration आप ले रहे हैं. Minus K, it is also constant, and T is the x-axis. तो हमने ग्राफ जो बनाया, that is between the concentration of A divided by time. So when time is equal to 0, the concentration of A is A naught. Now slowly the concentration will decrease, and at T 100% it will reach here. अब देखिए NCERT में ना उन्होंने इसको पूरा से कंप्लीट नहीं किया, ठीक है, बट सही रिप्रेजेंटेशन यही है, बिकॉज जीरो ऑर्डर रिएक्शन गोज फॉर कंप्लीशन. तो स्टार्ट होगा A naught, मतलब द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल बी A naught हियर, एंड स्लोली इट विल बी ओवर. ठीक है, बिकॉज जीरो ऑर्डर रिएक्शन इट गोज फॉर कंप्लीशन. मेक सेंस? तो ये आपके पास क्या होगा, दिस इज द करेक्ट ग्राफ. ये अगर ग्राफ यहीं पे लिखा हुआ है ना, इन दोनों में अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट और सेकंड, which is the graph for zero order reaction, then first is the graph for zero order reaction. सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे एंड हो रहा है रिएक्शन, यहाँ पे एंड रिएक्शन नहीं हो रहा है. वही चीज हम लोग फर्स्ट ऑर्डर के केस में देखेंगे, दैट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इट गोज लाइक दिस, इट डज नॉट गो फॉर कंप्लीशन. और दूसरा ऑप्शन आपके पास अगर ऐसा होगा दैट इट गोज फॉर कंप्लीशन, देन दिस विल बी रॉन्ग. वो हम लोग जब देखेंगे तब देखेंगे. अभी आपको जीरो ऑर्डर के लिए याद रखना है. मेक सेंस एवरीवन? समझ में आ रही बात? ये सेकंड ग्राफ वाली, यस और नो? यस पक्का? ऐसा यस सर तो कन्विंसिंग नहीं लग रहा है. एक बार धीमे धीमे स्लो स्लो समझा दें, तेज हो गया था जी थोड़ा सर. जी. ठीक है, देखिए जी. हाँ तो बोलिए आप लोग, ठीक है ना, कि हम टेस्ट करते हैं आप लोग को. मतलब हम जब स्पीड कहते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि मतलब हम फिर पार हो जाएंगे वहां से. आप लोग एक बार हमको रोक सकते हैं सर, थोड़ा धीरे. देखिए, वी हैव सीन दैट, एक बार बताइए, जब टाइम 0 होगा तो कंसंट्रेशन A naught होगी. अच्छा, उससे भी पहले एक बात हम लोग समझ लेते हैं. पहले एक बात समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग बाद में बात करेंगे. ग्राफ कैसे बन रहा है ना, उसको हम पहले समझ लेते हैं. y इज इक्वल टू mx प्लस सी, सबको पता है, यस और नो? आई नीड यस और नो? y इज इक्वल टू mx प्लस सी. Yes, sir. Yes. असलान आंसर किया? Yes, sir. यस ठीक, वेरी गुड. तो y है आपके पास, c है, mx हो गया ना. तो y आपके पास क्या, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ A, दैट इज ऑन द y एक्सिस. नाउ mx, x के साथ जो भी रहेगा उसको m बोला जाएगा, है ना. x के साथ कौन है, k है, तो वो आपके क्या हो गया, स्लोप हो गया. एंड सिंस स्लोप इज नेगेटिव एंड वी हैव अ कांस्टेंट दैट इज c, तो y इंटरसेप्ट मिल गया आपको, स्लोप इज नेगेटिव सो इट विल बी डाउनवर्ड्स. नाउ अब हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, when time is equal to 0, when time is equal to 0, the concentration of reactant is the maximum. And maximum मतलब कब, जो A naught होगा, initial concentration होगा. So we will start from here. And at the end, जब reaction complete हो जाएगा, जब reaction क्या हो जाएगा, complete हो जाएगा, at that time, that is T 100% पे, there will be zero reactant. reactant पहले 100 था, आपने उसको खत्म कर दिया, तो अब reactant कितना बचा, 0. That means it has to touch the x-axis when T 100% is there. Make sense, yes or no? आप समझ में आई बात? हाँ, yes, sir. ठीक है. यस अब इन दोनों ग्राफ को हम थोड़ा कंपेयर कर देते हैं. इन दिस ग्राफ, ये ग्राफ क्या हो रहा है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे, है ना. इस ग्राफ में क्या बताया जा रहा है कि जीरो ऑर्डर का जो रिएक्शन होता है इट डज नॉट कंप्लीट, वो कंप्लीट ही नहीं हो रहा ना. सी, इतना रिएक्शन बचा हुआ अभी भी, इफ इट इज एंडिंग टिल हियर, यहीं तक ग्राफ बनाया, तो दिस विल बी रॉन्ग. हाँ, अब ये बात जरूर है कि आपके पास अगर चार ग्राफ्स इस तरह से आ जाए कि एक ऐसे है, दूसरा आपके पास ऐसे है, तीसरा आपके पास मान लीजिए कुछ इस तरह से है, और चौथा आपके पास इस तरह से है, तो अब यहाँ पे दिस फोर्थ वन विल बी राइट, बिकॉज कंपेरेटिवली, बिकॉज यू हैव टू चूज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन इन द एमसीक्यू. आपको अगर बनाने के लिए कहा जाए देन यू विल मेक दिस पर्टिकुलर ग्राफ. लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सवाल में इन दोनों के बीच में, तो आप फर्स्ट वाले को पिक करेंगे. ठीक है, चलिए, that's what I wanted to say. Next is the graph between T half and the initial concentration.
So we have seen the equation T half is equal to A naught upon 2K. And this is according to the equation y is equal to mx. What is x here? The initial concentration of A. तो initial concentration of A को अगर आप बढ़ा रहे हैं तो टाइम ज्यादा लग रहा है. इट इज वेरी सिंपल. स्लोप यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/2k. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट. इंटरसेप्ट इंपॉर्टेंट है आपका, आपका स्लोप इंपॉर्टेंट है. दे कैन डायरेक्टली वो ऐसे ही पूछ सकते हैं. For a zero order reaction, the graph, what is the intercept for the graph between concentration of reactant versus time? What is the intercept? It is A naught. ठीक है. तो ये सारी चीजें आपको क्या है, मतलब ये आपको प्रैक्टिस है. ठीक है, बेसिकली आपको प्रैक्टिस करना है. इसको बैठ के ऐसे रटने की जरूरत नहीं है. यू विल मेक अ शीट जहां पे आपने जितने भी ग्राफ्स है ना, ग्राफ्स को हम लोग वहां पे कट करें. ठीक है. सो यू हैव टू मेक अ शीट लाइक दैट. और इसको रोजाना आप मतलब देखना चालू कर दीजिए. अब तो बोर्ड्स के एग्जाम्स नजदीक आ चुके हैं. ठीक है, चलिए. मूविंग ऑन, वी हैव अ क्वेश्चन. For a reaction, the rate constant is given as itna. How long will it take to reduce the initial concentration from 0.1 molar to 0.064 molar? Please write this down, solve it.
Yes, guys. Any progress? यस सर, भेज रहा हूँ सर. Josafia has sent. Okay, so time required is you need to write the units, otherwise वो boards वाले half marks काट लेंगे, Safia. ठीक है? ओके। Hmm. Okay, Arsalan has also got. Fine. Krishna Priya, what about you? Doing, sir. Hold on. Okay, fine. Krishna Priya has sent the answer. Oh my God. No, Krishna Priya, you're getting too high of a value. See. So the K is given, A naught is given, A is given, T has been asked. So A naught, A is equal to A naught minus KT, 0.064 is equal to 0.1 minus 4 into 10 to the power minus 3 times T. ठीक है? So this whole, इस पूरी चीज को हम उधर ले जाएंगे and 0.064 को इधर ले आते हैं. So you will get T into 4 into 10 to the power minus 3. This negative thing got here, so it became positive. 0.064 will go there, it will become negative. So it is 0.1 minus 0.0064. Then if you subtract these two, you will get 0.036 divided by 4 into 10 to the power minus 3. है ना? 0.036 क्या ले सकते हैं? 36 into 10 to the power minus 3 divided by 4 into 10 to the power minus 3. 10 to the power minus 3, 10 to the power minus 3 will be cancelled, and 36 upon 4 will be equal to 9 seconds. Does this make sense, Krishna Priya? Yes, sir. देखिए कहाँ गलती हो गई आपसे? The 10 raised to power minus 3 and 10 raised to power minus 3, I added it. You added it. अच्छा अच्छा, आपने -3 को अच्छा -6 कर दिया शायद. ओहो, अच्छा अच्छा, ठीक है. तो देखिए मैथ्स में कहीं कहीं आपका ये हो जा रहा है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जा रहा है ना? ठीक है. सो आई थिंक टाइम इज ऑलमोस्ट ओवर, है ना? आई विल गिव यू गाइस, आई विल एंड द क्लास नाउ. 20 मिनट्स है आपके पास. जो भी हम लोगों ने अभी पढ़ा है ना, ठीक है, यू हैव द नोट्स ऑन योर फोन्स. आप उसी से कम कुछ ना कुछ स्क्रिबल डाउन कर ले, नोट्स कम से कम बना ले, है ना? और जस्ट व्हाट यू कैन डू इज रीडू द क्वेश्चंस दैट वी हैव डन. एटलीस्ट इतना कर ले आप लोग.
ठीक है। इफ यू डू समथिंग, राइट समथिंग ना, देन वो स्टे करेगा आपके फिर माइंड, है ना। ये 4 to 8 PM कुछ नहीं है, इसको ये दूसरे क्लास का है, ठीक है। Fine. चलिए, so that's it for today and we will meet on what Monday we are having